and try to set up. So you should try to set up different type of club model, which are less traditional, to appeal to many different people, including setting up more Rotary clubs. And don't forget that RI President-elect Jennifer John encouraged incoming DG to set up at least 2 new innovative or cost-based clubs during their term. So let us look at it, type of club, different type of club models. Satellite clubs only require 8 members. We have passport club, corporate club, course-based club, and alumni club. These clubs require 20 members and must follow the standard Rotary club constitutions. Actually, these are a normal Rotary club. Those are only models or name that suggested by RI. You can create your own cooking club, a golf club, whatever suit the members of the club. And this type of club, these are less traditional club. And also don't forget to set up more Rotary clubs, which also require 20 members. So RI do encourage set up more community-based Rotary clubs. This type of club attract more diverse membership and leverage new ideas. Let us look at it one by one. Satellite club. Satellite club is just a charter club, is an extension of a charter Rotary club. So a club within a club. I'm glad that in Pakistan, your district also have a few satellite club. Member register is under parent club and run by a chairman, not a club president, and no charter for certificate. When you set up a satellite club, the DG does not have to get to approve that, but you just have to let the DG know that there will be a satellite club in the district. And then meeting location, day and time may differ from the parent clubs. And they have their own project, and they also have their own bylaw and board. And they have to pay the same amount of RI dues. But in our district, we lower the club and district dues for them. So it make it more affordable for those young generation satellite club. Remember, satellite clubs serve as transitional club, not a standalone club. And satellite club does not have a time limit. If it mature up to 20 people, you can still remain a satellite club. You don't have to be a standalone club if you do enjoy the support from the parent club. However, I do encourage you quickly charter if you have 20 members to become a standalone club. Next, passport club. What do you mean by passport club? Passport club refer to the ability to move freely from one club to another club, attending meeting or participating in another club project. Let us look at it. It's more flexible, passport club. Why? Because accommodate members' busy schedule, especially those young generations or people are busy at work. And the club health is measured by participation rather than attendance. And passport club hold a few meetings each year. Engaging meeting. The meeting is very engaging because why? Because they focus on service and socializing. And broad appeal to who couldn't join a more traditional club, especially those who left Rotary because they are too busy. You can bring them back and set up a passport club. More connection because members quickly build relationship across the district and beyond the district. Stronger service project because they connect with members from one club to another's and they bring back the experience, and maybe they can also have a joint project, global grant or a district grants. So they become a partner, they become each other partner, especially for global grant, you need international partner. You can also use this as an international partner if you have a club beyond your district as a passport club. And then affordable because costs are kept to a minimum because meetings don't usually include meals. And let us look at another type of club, corporate club. Corporate club is
allow Rotary Club involved in a corporations, can be any business organization or non-profit organization or government entity. And Indonesia, we do have a corporate club as well. So I do encourage you to set up a corporate club because there are a lot of benefits for Rotary. What are the benefits for Rotary corporate club? First, it creates new partnership and collaboration that can be used address big challenges, especially for our project. And you can also tap on the network and the resources of this senior management or senior leaders in the corporations. Second, diversify club skill and expertise, because corporate club, they have different type of management or skills. I mean, corporate officer, you can use that. You can tap on their expertise. And also increase resources and capacity for service, as I have mentioned before. And what is the advantage for cooperation? Look, give corporate members access to Rotary Global Network. Remember, we have 1.2 million members around the world, almost 200 countries, so they can tap on our networking as well. Besides, we tap on their networking, and also boost corporate image, part of the CSR, and also give corporate members the chance to develop leadership skill and professional skill, such as project management and public speaking. Don't forget, we do have what is called Rotary has partnership with the Toastmaster. So at least if they do join Rotary, they can use this advantage as well to learn from Toastmaster. And then corporate club also provide flexibility to primary members. What are the flexibility actually? I just want to share very shortly what is a flexibility for primary members for corporate club. We have two types of model actually for corporate club. The first model is a primary corporate club, pay dues, and all members pay dues and are reported as active members. And then they can choose 1 or 3 members who do not have to pay dues and attend the Rotary Club on behalf of the primary members. For supposing the primary member cannot make it to a meeting, they can select 1 or 3 represent them to attend meetings or any Rotary activities. However, those alternate members do not have to pay dues. So many clubs, we ask the alternate to be named and approved by the club before they can attend. It's up to your bylaw. So you can set up a kind of bylaw and choose alternate and name them and get approved. Since the alternate members aren't paying RI dues, they are not reported as RI, but their membership detail can be recorded only in your club, not in RI website. And another models, this club charges a flat rate of due for corporate members, all the same. So everyone can attend a regular meeting or service project. There's no alternate. So the fee they pay a flat rate. Yeah. So these RI dues for the corporate members are included in a flat rate and allow all the corporate members to be full active members of the club, and RI count them as the membership in membership RI data. I just want to show you very briefly 2 corporate clubs that have been set up in District 5 or 20 in America. This was a satellite club before, and it's very posh. Bentley Cheshire Rotary Club used to be a satellite club, and when they reaches 20, they become a standalone club. So this Bentley Cheshire Club include of Bentley employees and community members. So you can also mix corporate club with community members, and they alternate meeting between Bentley Motors and other places. And another type corporate club is purely made up of corporate members. This one in District 9640 are made up of 27 corporate leaders from 40 international and national company. So there are 2 types of corporate club example that I have showed to you. Next, cost-based club. Cost-based club is very, very interesting. So cost-based club
it attracts those members that have passion or passionate about a particular area and only want to focus their service in that particular area. For example, like in Indonesia, we have this course-based club. They transform a swampland into a productive land. This is a very remote Muslim community. I'm so glad I was able to help Alhamdulillah, I was able to help this Muslim community because there was a course-based club in that area. And this club focused on only agriculture. And they use global grant to transform the swampland into a productive land. And they have created 5 global grants and now yield an income of $5 million for the Muslim farmers on that remote area. Before this project, Rotary was not accepted. But after this project, everybody yells, Alhamdulillah, Rotary. See how beautiful it is. This also boasts our public image in that remote area. And everybody knows about Rotary now because of this project. So course-based club is very useful. That's why RI President Jennifer John encouraged you also to set up course-based club during her term. Don't forget about Rotary clubs. I love Rotary Club because they're energetic, they're passionate, they bring new ideas. To me, they're the stem cell. They bring fresh idea and energize us. And don't forget, beginning for July 2020, Rotary Club, we allow to be either international or host sponsor of a global grant if they previously have experience of a global grant. So now our membership made up of 2, Rotary Club and Rotary Club's membership of Rotary International 2019 CON enactment to admit Rotary Club to RI membership. So we have 2 types of membership now. Now to expand our reach, we also need to increase our openness and appeal. How do we do this? How do you do this to increase our appeal? Very simple. Don't forget, 2016 COL give Rotary Club more freedom to decide when, where, and how they meet, and type of membership. You can choose many type of membership. We can discuss this also later. So this is a big part of our ethos within Rotary is flexibility. 2016 COL give this flexibility. Meeting format, you can change your meeting format, attendance requirement. You don't have to attend the meeting every week as long as you're active in the service project, or the club can make their bylaw. And you have a club option. We have just discussed earlier before this, that type of model clubs and membership option, we look at it. You see, most of the club now use flexibility effectively during COVID at this pandemic time. Any Rotary Club can amend its bylaw as permitted by the standard Rotary Club constitution. You can amend this and with all this flexibility. RI research showed that club has taken advantage of the new club flexibility option, have reported increased membership, greater diversity in age, better experience, and more engaged members, and the club become more vibrant. So this is one of the best practices of RI. So do use this to increase our Rotary openness and appeal. And now I want to discuss a different type of membership type that offer to you at this moment. We have what we call introductory membership. So new members pay a reduced fee for a small period of time. So if you invite a new members, you can introduce them to your club and let them just pay a reduced fee for your club, until they're settled, until they're used to your club, then you can charge them a full fee. And then corporate membership. Corporate membership is different from what we discussed corporate club. Corporate membership meaning is a business-led leaders or employee from a corporate, and they choose 1 or 2 leaders, senior leaders or management official to be active to become a Rotarian in your club. Another type, associate membership. This is a trial period to engage interested people in Rotary. Then they attend any meeting of the club, including socials, community service,
or any activities. We call it associate membership. And then another one, family membership. They are family members. They pay, and if it two family members join the club, you should also reduce a fee for having more than one family members, so they will attract more members. And this can have an alternate attendance as well. And young professionals, this is our next generation, especially those with leadership skill. So don't forget, invite more young professionals to join your club. These are catered to young professionals with reduced club dues and flexible attendance. All these are just best practices or initiative from RI. You can adapt it in your club to increase membership. Rotary will count these people as your club membership and then consider them active member if they pay RI dues. Next, to expand our reach, RI President Jennifer John also encouraged us to do collaboration with other organizations, because collaboration is another way to revitalize your club and share your value with new audience. Is a form of partnership with new organization and agency. For example, a school, university, local chamber of commerce, local government, social service agency, and other volunteer organization. RI President-elect Jennifer John asked us to open our doors and harness our connection to create new partnership. Next, to build awareness of our impact and brand is also how are we going to expand our reach. So how do we build awareness of our brand? Remember, use Rotary brand and image with discipline and consistency. Do not alter evidence of Rotary. So unify our brand. I don't suggest, and we are not allowed to alter the logo, the Rotary logo. And brand and image are largely determined by who we are and what we do. Remember, these are our brand. You are the ambassador of Rotary. So this will determine who we are and what we do. And next, we need to promote what Rotary does for the community. Don't post selfie picture, post action picture. Post your project in a Rotary showcase or in a social media to publish the good work we do locally or globally. Because we need a strong online presence. So be active in social media and website, especially if you want to attract young members. And also make sure Rotarians are seen as people of action in the community. Do not just post photo and put it in the social media. Those are useless. So people of action is very, very important, because we are people of action. We are problem solver. We transform the community and we solve problem for community. So we have to have a feasible community service project that let the community see Rotarian at work. So these are very good picture. The one on the left, you see your DG is in action, and another Rotarians, I don't know who is this. He's also in action. Very nice picture. So. And also, I do also encourage you publish signature project and activity and share this post and share comparing story. Tell comparing story, because comparing story are extremely powerful communication tools in our life. And if we share in a social media, people may feel very touched with that story, and they look at the project, and that is how we attract more members. Remember, if Rotarian want to be recognized as a premier service club in your community, then strong and consistent branding is a must. So if we increase public awareness and strengthen our image, we can receive proper acknowledgement, attract more, and also attract more people to join Rotary. Before I end this, I really want to share this slide with you. So, fellow Rotarian, as we say, we're people of action, so do take actions. Yeah, we learn, we ask, and we visit. So, if
I mean, a lot of people are talking, even in my district, we're talking about membership is a priority. So, but beside membership, we also need to do more project. Yeah, act as a people of action. So I do encourage you to take action on learn and understand membership data and trend in your region. How do we do that? Yeah, Rotary Club Centrals. Make it easy for you to see the trend closest to you. And also review your membership report on a monthly basis and utilize past trend to create a realistic and attainable membership goal. Remember, when you set goals in a Rotary Club Central, do set an achievable goal. I mean, achievable and measurable. But if you think that the goal that you put in the beginning is not achievable, you can revise every 3 months. And ask, remember, you also need to retain members, yeah, beside attracting new members. So ask members what matter most to them and find out what are their value. And they might be, in your Rotary Club, something might be missing. So you need them to stay for life and give them a good experience, a good value of your club. Remember, your members are your customer, club president. Yeah. So do a survey, a membership satisfaction survey in your club, and also do a health check to retain your members. So once you find out what they like about your club, or what hobby they like, interest they like, then you can put them or assign them in the appropriate activity or project. And I can assure that they will stay for life. Just like myself, my district government find that I have passion in a service project, and I've been a Rotarian since 2005, and I'm still here. And my blood at this time is not type A or B. My blood right now is R, Rotary positive, because I love Rotary. So if you make people to stay, look at the interests and tap on their skills, and I know that Alhamdulillah, they will stay for good. So visit, take action, visit Rotary membership, rotary.org membership, also resources and tools to support you, because I spend millions of dollars for tools to help us to increase membership and to take action. And also access to club assessment, also direction to how to manage your membership lead is also very important. Guideline for starting new clubs, and also membership type that we have discussed. And also there are many resources that are designed to help you. Thank you. Together, let's build connection and opportunity that will allow people who share our drive to the same. So let's create opportunity to bring people into Rotary and experience the power of Rotary. So fellow Rotary leaders, club president, the impact began with you. Thank you. Bahut shukriya. Dilawar, you have to share screen. Dilawar, yeah, I'm going to stop that way. Thank you. Thank you. Thank you. Wonderful presentation. Thank you so much. It was really enlightening and really gives a good perspective of Rotary and extremely motivational. And I cannot take away the words that Zina said. Totally a role model for Rotary and the face of Rotary, actually. Thank you so much. Thank you, district trainers, Chair Ali. Thank you for inviting me. Thank you so much. Yeah. I'm so Allah grateful. Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Thank you. Thank you. Now, we would like to move forward. Dr. PDG Ulhar was going to join us, Ulhas Kolhatka from India. He's a doctor by profession, and he just got a call from the hospital to attend a 2-year-old child for operation. So he had to leave our session and proceed forward. And I'm very grateful to Trustee Aziz Mehmet Saab to joining us a bit earlier than his session, and he is going to now take his session. I would like to have
Lubna Khalid, President Lubna Khalid, to please introduce Aziz Memon Saab. Lubna, can you please introduce Aziz Memon Saab? The gentleman needs no introduction, but just a little Rotary formality, sir. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It was a very, very difficult work to introduce Aziz Memon Saab because he is such a well-known person. Today, I feel honored to introduce one and only Aziz Memon Saab. Mr. Aziz Memon is a humanitarian, industrialist, and diplomat who serves as a chairman of the National Polio Plus Committee, Pakistan, for Rotary International, and has dedicated his time and resources to completely eradicate polio from Pakistan. His efforts towards community service includes education, flood relief, health, and many other initiatives. The President of Pakistan has conferred him with the Pride of Performance award for his dedication to public service. Mr. Memon has also won numerous awards, including the Rotary Foundation Citation for Meritorious Service Award, Rotary International Service Award, Service Above Self, and Rotary Regional Service Award for a polio-free world. As an industrialist, he is one of the largest textile manufacturers and exporters, and he founded and chaired numerous industry, trade, and social forums such as Pakistan-Japan Business Forum and the Pakistan-Italy Business Forum. He is a chairman and CEO of Karachi Garment City. Mr. Memon also holds a diplomatic office as the Honorary Consul General Republic of Suriname. Thank you very much. Over to Aziz Memon Saab. Greetings to Rotarians, to President-elect, the trainer, and the team. It's a privilege to be with you this evening and to share some thoughts on the Rotary Foundation. Rotary Foundation is now 105 years old, having taken off in the year 1917 under the leadership of President Archclum. Today, Foundation is a strengthening arm of Rotary. We are there always, whether it is tsunami or whether it is COVID. Rotary Foundation plays its role. Before I go further, I would like to share a few slides with you on Rotary Foundation. Hafiz, could you please share? I can see Admiral also. Greeting to the Admiral. Are you sharing slides? Okay, so till we have the slides, I'll continue talking. So my friends, Rotary Foundation is a two-way stream. You have to start learning how to use the foundation. As just now, Eva was telling you that you have to go to My Rotary and you have to log into the grants. It is so simple, it's so easy that you will not have any issues. And if you find issues, the district team will be able to assist you. I would be too happy that if more and more clubs get involved in the global grants. We are trying to increase the networking of the grants, conducting training also. Recently, past President Csr has started a training for all the
3271 officers who would like to know more about how to utilize the global grants. नहीं हफीज, स्लाइड्स पॉसिबल नहीं है हफीज? Hafiz, are you with me? You have to unmute yourself to talk. Unmute कर लो. नहीं, we can't hear you. Unmute करो. सर आपकी स्लाइड शो हो रही है जी? स्लाइड्स आर बीइंग शेयर्ड विद एवरीवन सर. नहीं हो सकती है? नहीं सर, सबके साथ शेयर हो रही है, सबको नजर आ रही है. नजर आ रही है, मुझे नहीं आ रही है. आ रही है तो मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ. दिलावर? ये सर अभी देखें अगर आपको. हाँ, ये अभी नजर आई. Okay. Now I can monitor it. Okay, I can do it. Can I? Yeah. Next, or you'll move the slides, or should I move it myself? दिलावर, थोड़ा सा तरह इसका देखिए, फोकस को एडजस्ट करिए ना, ये पढ़ा नहीं जा रहा है. दिलावर, लेट मी जूम इट सर. ओके, इसको पहले ट्रायल रन नहीं किया था. ओके, दिस इज बेटर. नाउ जिस वक्त कोविड-19 आया और जो है वो बहुत से लोग मारे गए, बेघर हो गए लोग, तो रोटरी इंटरनेशनल, रोटरी फाउंडेशन ने अपना पूरा रोल अदा किया. ग्लोबल ग्रांट्स जो हैं वो अप्रूव की और जहां से भी डिजास्टर ग्रांट की रिक्वेस्ट आई वो फौरी तौर पर अप्रूव की गई. तो रोटरी ने कोविड में अपना पूरा साथ दिया और काम किया. नेक्स्ट स्लाइड दिलावर. पूरी स्लाइड एक वक्त में आ सकती है, आधी आ रही है? नेक्स्ट. दिलावर, आई कैन डू. अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो मैं आई कैन डू विदाउट द स्लाइड्स. नहीं पॉसिबल है? ओके. दिलावर? यस सर, we are on the slide of grants and funding. क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो दिलावर? We are on the slide, that is the next slide. तो नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट कहूं तो नेक्स्ट पे आ जाऊं ना? नेक्स्ट कर दो. बहुत टाइम ले रहे हो. नहीं ना, नहीं हो रहा है ना? ओके, अगर नहीं हो सकता है मैंने तो आप वैसे ही बात कर लें. स्लाइड्स जब चलेंगी तो फिर हम आपको ले लेंगे ना. जी, आप वैसे ही बात कर लीजिए. जब स्लाइड्स आएंगी तो फिर हम आपको ले लेंगे, स्लाइड्स ले लेंगे. नहीं तो छोड़ दें फिर स्लाइड्स को. अब लीव इट असाइड, आई विल टॉक माई सेल्फ. छोड़ दें स्लाइड्स को. नहीं हो सकता तो मैं तो भेज भी नहीं रहा था, हफीज ने इंसिस्ट किया कि भेजें तो मैंने भेज दी थी. अच्छा, तो आई एम टेलिंग यू दैट कोविड में जो है वो जितनी भी हमारे पास कोविड की रिक्वेस्ट आई, वर्ल्ड वाइड वी अप्रूव्ड ग्रांट्स ऑफ $385 million. और इन ग्रांट्स के लिए जो इंटरनेशनल पार्टनर जरूरी होता है उस कंडीशन को भी वेव कर दिया गया. अभी भी जो है वो कोविड की रिलेटेड ग्रांट्स आ रही है और अप्रूव हो रही है.
अब देखें कि जो ग्लोबल ग्रांट साल में अप्रूव होती है वो उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, और रोटरी जो है वो हर साल जो है वो $4.3 बिलियन, चाहे वो ग्लोबल ग्रांट्स में हो, चाहे वो स्केल ग्रांट में हो या डिजास्टर ग्रांट में हो, इतने अमाउंट को डिसबर्स करता है, $4.3 बिलियन। आप ये देखें कि जो है वो पिछले साल जो हमारा टारगेट था 410 मिलियन का, हमने उसे एक्सीड करके $441 मिलियन किया है। इस साल भी जो है हमें उम्मीद है कि हम $450 मिलियन का जरूर ही फाउंडेशन को पैसे पहुंचाएंगे। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप जितना अमाउंट दे सकें, चाहे एनुअल गिविंग में हो, चाहे पोलियो में हो, चाहे आप प्रोजेक्ट्स के लिए दें, आप जरूर और जरूर दें। एक हाथ से दें और दूसरे हाथ से लें। तो ग्लोबल ग्रांट्स की तादाद को नंबर जो है वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि बिफोर द ईयर एंड्स ग्रांट के जो है पैसे खत्म हो जाते हैं। तो जब आप ग्रांट्स के लिए भी जाएं तो कोशिश करें कि आपको जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में आप उनको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। इस साल कोरिया ने हमें तकरीबन 18 ग्लोबल ग्रांट्स के लिए पूरे पाकिस्तान के DDF दिया है, और भी कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं, जापान से, इंडिया से, USA से। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आपके पास भी कोई प्रोजेक्ट हो आप अपने गवर्नर से शेयर करें, मेरे को कॉपी मिल लें, और आई विल ट्राई टू फुल्ली असिस्ट यू। ये तो अच्छा, एक और मैंने कुछ स्लाइड्स पोलियो की भी दी थी, वो भी नहीं चल पाएंगी? तहजीब जी, दिलावर पोलियो की स्लाइड्स हैं कोई, अली भाई? चलिए यही शुरू करते हैं, अगर ये बेहतर है तो। नेक्स्ट वन, दिस इज बेटर। नाउ पोलियो का आप देखें कि पिछले 40 साल से रोटरी और हर रोटेरियन, हर एक का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लगे हुए हैं दिल जान से इस चीज को खत्म करने में। और आप लोगों की कोशिशों से 27 जनवरी को हमने पाकिस्तान में 1 साल मुकम्मल कर लिया बगैर किसी पोलियो केस के। ये मुबारकबाद का सेहरा आपके सर पे आता है, और उसके साथ में जो है वो एक कमिटमेंट भी चाहिए हमें, क्योंकि इस चीज को हमें 2 साल और लेके जाना है सर्टिफिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैं एक छोटा सा आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से केसेस डिक्रीज हुए, कैसे ऊपर चले गए थे, ब्रेकआउट्स जो हुए थे गलत इंफॉर्मेशन से, और फिर वो नीचे आए, और जो डिराइव केसेस हैं उसकी तादाद में भी जो है पूरी हद तक कमी हुई है। डिराइव केसेस बहुत ज्यादा है अफ्रीका में, तो वो हमारे पास इतना उसका अजाब नहीं है, मगर डिराइव केसेस पे भी हमें जरूर नजर रखनी है। वाइल्ड पोलियो से फ्री तो अफ्रीका हो चुका है, डिराइव केसेस ज्यादातर नाइजीरिया में है, हमारे पास उसकी तादाद कम है। तो नेक्स्ट स्लाइड। मिस्टर बिल गेट्स आए थे खास तौर पे मुबारकबाद देने को गवर्नमेंट को और पार्टनर्स को 1 साल मुकम्मल करने के लिए। ये पहली विजिट थी बिल गेट्स की, और जो है बहुत ही सिक्योरिटी के अरेंजमेंट थे, सिर्फ ये चंद घंटों के लिए आए थे, और जिसमें इन्होंने ये सुबह 8 बजे NEOC में एक सेशन किया, फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, फिर प्रेसिडेंट हाउस में एक डिनर, और इसके बाद ही डिपार्टेड। तो ये भी एक कमिटमेंट है, उनका भी कमिटमेंट है, हमारा भी कमिटमेंट है, तो हमें इसको लेकर के आगे जाना है। नेक्स्ट प्लीज। ये तो इमरान खान से मुलाकात जो की थी हमारे रोटरी वर्ल्ड प्रेसिडेंट पिछले साल के थे हॉलगर, प्रेसिडेंट शेखर ने वादा किया है आने का। वी डोंट हैव द डेट्स, और उम्मीद है कि वो भी जरूर आएंगे। आने वाले साल में भी जो प्रेसिडेंट है वो भी उन्होंने जो वादा किया है आने का, वो डेट सब कंफर्म हो जाएंगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट। अब जो है वो बाकी
पीरियड में हमारे पास चैलेंजेस हैं। अफगानिस्तान में जो है वो 6 केसेस हो गए हैं। पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में कुछ एरियाज में एनआईडीज को कॉल ऑफ करना पड़ा, इसलिए कि जो है वो 8 वैक्सीनेटर्स को मार दिया गया, गोली मार दी। ये अफसोस की बात है। सिक्योरिटी सिचुएशन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी बड़ी टेंस है, और जो माइग्रेशन वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस वजह से हमें और चौकन्ना रहना चाहिए। और हमारे पास भी एरियाज है, जैसे साउथ वजीरिस्तान है, वहाँ पर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज एरियाज है, वहाँ पर इतना आसान नहीं है जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करना। हमें जो है वो वहाँ पर फौज की और रेंजर्स की पूरी मदद मिल रही है, और उसकी बेसिस पर काम वहाँ पर जारी है, हो रहा है। हमें उम्मीद है कि उससे भी हम जो है वो आगे निकलेंगे। अफगानिस्तान इज अ बिग चैलेंज, ये सबके लिए चैलेंज है, और उनका हेल्थ सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है कि वो हमारे साथ कदम ब कदम चलें। हमारे को पूरी उम्मीद है कि वर्ल्ड लीडर्स भी अफगानिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाएंगे, ताकि वो पोलियो की मुहिम में भी शिरकत कर सकें। नेक्स्ट। तो ये तो कुछ पोलियो की बातें थी आपसे, और एक बात और मैं करूं आपसे कि इस वक्त जो है वो एनआईडीज की कैंपेन जारी है। ये 6 मार्च तक रहेंगी पूरे पाकिस्तान में, और इसमें तकरीबन 41 मिलियन चिल्ड्रन को टारगेट किया जाएगा। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप जो भी रोल कर सकें उसमें, चाहे वो डीसी से मिल करके या डीएचओ से मिल के या कुछ अवेयरनेस क्रिएट करके, ये एक पोलियो टॉक शो टीवी पे करके, जो आप कर सकते हैं वॉक करके जरूर करें, ताकि जो है वो आपका क्लब, आपके डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइज हो और इस काम को आगे लेकर के चले। रोटरी फाउंडेशन is always available to you, and it is your foundation. It is not the foundation of Rotary World President, nor of the Rotary Foundation Chair, nor of the directors, nor of the trustee. Rotary Foundation is your foundation, तो आप उसको सपोर्ट करें, और रोटरी फाउंडेशन से जो भी आप फायदा उठाना चाहें जरूर करें। I will be available to you, to Tehzeeb Kazmi, all along, and I wish him a successful year. Thank you for listening to me. Assalamu alaikum. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी अली भाई, ओवर टू अली हफीज। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, sir. Now we would like to have a brief talk on public relations and public image. For that purpose, in the absence of Dr. Ulhas, I have requested CM Bandre Sahab to share a few words, and we'll run the presentation. First, let me introduce CM Bandre. He is the district training advisor for Pakistan 3271 district, and he is a charter member of Rotary Club of Thane Midtown. He joined Rotary in 1989 and is a member of RC Thane Metro. Continues to enjoy Rotary's journey, which started in RID 314, now which has become 3140, and again 3142 as the redistricting took place. Classification: he's the manufacturing of electrical fitting and fixtures. He's a club president and was a club president in 1995 to 96 and 2015 to 16. He's held various positions at club and district level, a multi-Paul Harris Fellow and recipient of many club, district and Rotary leadership awards. CM has traveled across countries and addressed Rotary clubs at national and international level. He is a senior discussion leader of Rotary Leadership Institute, South Asia, including Pakistan. He plays an important role for Pakistan's RLI program. He is the advisor and a coordinator for the program itself. We're thankful for CM to be assisting us for this year,
And without further ado, I request CM to please. Yeah. Thank you, Ali. Can you all hear me? And can I get the help of somebody to put the PPT on? Dear friends, by the time the PPT is on, let me just share with you. We are going to talk about something very interesting. Something interesting which is called as art of science. Okay, art of science of doing PI. And PI is something which we generally try to get it confused between the two things, whether we are going to talk about publicity, whether we're going to talk about public relation, whether it is a public image. Okay, so art of science of public relation. Can I have the slide, please? Yeah, Dilavar, you could put the slides on, please. Dilawar, this seems to be a problem. Dilavar, I had seen you putting the slides. Dilawar, restart, Is please. it visible to everyone? I think Dilawar is having Is it signal visible to everyone? issues. Raza, can you take over and put the slides? Anyway, friends, in the meantime, by the time the slides come in, let us move not to waste time of yours. Time is precious to all of us. We are going to talk about art and science of public relation. Now, what is public image? As I said, so is it publicity, what we do? Is it public image, what we try to create, or is it public relations? Now, why do we need to do a PI exercise? First of all, we need to understand that. And for that, let me just thank you. Thank you. You could just move to the further slides. Yeah, further one. Next one. Yeah. Why do we need to do a public image exercise? So Rotary International, just hold it. Rotary International did a massive survey across trying to catch up what is the public image or relation, what they perceive Rotary to be. And therefore, public's opinions were pulled out, and there were thousands of people who were enrolled. Next slide, please. What were the revealing? Can I have the next slide? What were the revealing opinions from the people, how they perceived? They perceived the Rotary clubs to be the eat and meet club. Next slide. Also, they found that it is a wine and dine club. Next slide, please. Yeah, next slide. They also perceive that it is a male-dominated, pale, frail clubs. So, next slide. Where has Rotary gone? This was the perceptions, what outside world. We being a Rotarians always felt we were doing good, but the public outside felt it is something more. So therefore the question arose, what needs to be done? So the answer was, next slide, we need to do a brand building. Now, what is brand building? First of all, we need, next slide, we need to understand what is it? What is a brand per se? What is it based upon? What are the brand strategies we need to do? So there are three basic questions which evolved from the survey. So first, let us look into what is it. Now, next slide. Something like, let us take some examples to understand what we were trying to look into. It has to have a unique name and image. The moment you see this apple half eaten, what comes to your mind? Immediately, that's a recall of a brand. Next slide. Another, what do we promise to customer? Satisfaction. You just need to have that picture and it floats for. Next slide. Significant and differentiated presence. Now, I've just picked up one of the things to share with you. It needs to have an identity, not only the name. Next slide. It needs to have consistency. Consistency is built over a period. It takes a long, long time to build so. The example comes to our mind is Enjoy Coca-Cola. Over the years is built up. Next slide. Now, what is it based on? So there has to be a brand message. Now, what is its next slide? What is Rotary's brand message at the moment? We find it's confusing.
because we all were talking about service. Is it leadership? Is it fellowship? Or is it giving to others? Or it is something else? So this is what was happening after the survey. Next slide, please. So therefore, Rotary brand was confused. That was the ultimate result which was found out. Now we need to find out why. You could have a look at these pictures. You know, we had the Rotary being displayed into various formats, whether it is RILA, EREY, Interact, Rotaract. Next slide, please. So therefore, we need to have a consistency. Next slide, please. We need to have outstanding where the wheel of Rotary will be, where the Rotary International will be placed, where do we place Rotary? Next slide, please. Hello, can I have the next slide, please? I think there is a delay in the slides. Is there a problem with the slides? Can I have some feedback, please? Hello? 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 Okay, let me move forward and you can catch up with the slides with me. So what is happening was we need to have completely a place where how the Rotary should be placed as a word, where the Rotary wheel should be coming and what should be inside. You know, Rotary International, earlier it was all over the places. Similarly, in one of the sessions in the PETs, we have covered up how the Rotary, Rotaract, Interact, the Rotary Foundation, and the Rotary Club's branding should be. And that is led us to brand strategy. Now, what is a brand strategy? We need to understand that once you have the cohesiveness of the placement of the name, the place where it would appear, then we need to look into brand strategy. The brand strategy starts with brand distribution channels. The brand distribution channels are simple. We need to have first, where are the regular channels? New generation news, because that is very important. And communication through what? Are we going to do communication through our projects, programs, leaderships, or are we going to talk about distribution channels? Now, when we talk about distribution channels, we are talking about website. Is it a website of the district? Is it a website of the club? Because they play important roles into the social media. You all are acquainted with whether it is Facebook or Twitter or any other mode. Those are all on social media. Even Instagram today is picking up very fast. The another one is the print media. Print media was earlier used, even today it has got its own significance. And lastly, and very importantly, is the importance of audio media. Now, the radio FM bands are picking up very fast. And that is one of the generation next social media where we could look into. Let us look into new generation news. You know, hyperlocal is again one of the tool which has come out, which has emerged. Yeah, you could move forward. And actionable news also is another one. We need to have news which is very credible. Now, critical means it has to have a credibility. Okay, because therefore, from there, you will have brands engagement with the news. We need to design our news very carefully. Trolling will be curbed because trolling is one of the angle which is again one of the new things today. Digital news channels will be more popular today, whether it is local or at national levels, state, also something you could look into. You could also look into communication through what? It, as I said, through projects, programs, and leaderships. Let us look into service projects. I have just picked a few of the slides to share because when we do our projects, they need to be our signature projects. Showcase them. Showcase much more of the beneficiaries around it. Showcase what it stands for.
See, some of the slides as we move around, you would see, we have one of the Institute for Chemical Technology. Now, when you show about that, it has got a name saying Shroff's Rotary Institute of Chemical Technology. Now, that is where the branding of Rotary stands for. Next slide, if you could, Dilawar can help me. Okay, is innovative projects. Like we had, one of the clubs having a cup showing a coffee within it, and it was written Capex for Rotary Kidney Foundation. That is innovative projects also being showcased. International spirit building. Now, international spirit building could be another showcase where in India we have Rotary's Doll Museum. Now, Doll Museum people walk in, and once they walk in, you are showcasing what is happening around, and that could be one of them. The another slide was about a blood bank, a big, huge hoarding saying blood bank. We have the camps being, but let it be ongoing. Let me come into the other things on leadership, and you can hold it. You can hold it over there. Okay, just hold it there. Then I will catch up with it. Leadership is very important. Every Rotarian should be wearing the pin. Every pin there is again a PR. Now we were talking about branding, internal and external. Internal branding talks about a logo and key message. It is at RI international level, it is at regional and zonal levels, it is at district level, it is at club level, and it is even at individual level. The individual level, what I talk about, a simple rotary pin you wear wherever, right in your professional, social, business, family get together, wear it. That is a PR. External branding we are talking about. External branding constitutes of media, local government, business communities, other NGOs and corporates, civic leaders can be involved, prospective members or people at large gatherings can be taken into. Internal branding, as I say, it is one of the five keys. It is one of the strategic partners we could do into, and Rotary PI awards could be one of the way. Rotary Public Image Award, you could institute it to enhance the image of Rotary. Coming to internal branding, let it be your joint PRs, let it be big projects, and also your e-bulletin. I'm just touching upon something on district level. Public image as an avenue. Service week could be an PI exercise, seminars, symposiums, workshops, vocational excellence award, which we keep on doing. Let it be at a high scale, but get it into the PR. Internal branding could be on air, it could be on print, electronic, and social. Internal, important to the president-elects, I would appeal, build up your public image committee. Enhance your events, projects, programs, and bulletins, not only to the club, ensure that the GML is reported timely and properly with the beneficiaries' photos. International, there are various, as I said. So let me move to now the external branding. Okay, external branding is basically through the newspaper. We were looking into external branding could be local government. You could pick up a local government's, signages, and with the help of them, maybe it is a public garden. You could have a rotary wheel instigated out there. In the external branding, talk about business communities. We have like Doctors Association or Traders Association. Why don't we organize a seminar for them? That would enhance the interaction with Rotary. External branding, Bill and Melinda Gates, a foundation that is with other NGOs. But when we tie of them, Rotary's image gets enhanced. Talking about external branding, why don't we look out at civic leaders? Civic leaders are another important. You pick up a local personality. They are the leaders in their own vocations and professions. Enhance with them some of the seminars. Invite them to speak at a larger public gathering and do the branding. Next, it could be the prospective members. We call them interest clubs out here. Get a group of members, ask one of the senior PDGs or somebody or DGs or PI person from the district or the club to
Speak to them. Internal people at large. You know, when we have the festivities, why don't we be a part of culture and traditions? Because there is a big public. Let public know what Rotary is doing. And next one, we could look into logo of Rotary being placed somewhere. Now, what are your resources? Next slide, please. Resources are effective public relation. There is a guide for Rotary if you look at clubs of page number 257. Okay, next it could be a Rotary Media Center. Do visit it. Media Crisis Handbook, you know, page 515. That will give it, but much important and very effective is visit your www.rotary.org, because that will help you to get more. And there is a brand center. Visit brand center. You will get various PPTs ready, where to do, what type of logos, whether you have a color logo to be branded, or it is a black and white, you know, gray background. So use that, make use of the resources. The Rotary RI Visual Identity Guide is there. What's Rotary? Page number 419. I am just reading out. And there are Rotary PR tips. Next one, human resources. Okay, you have assistance of regional public image chair and assistant regional public chair. Your DG and AGs are your resources, district PI committee. And if you have more, then contact.center at Rotary org. Develop a brand as yourself. Okay, next slide, please. Because when you develop yourself as a club, you are developing a brand for Rotary itself. Okay, keep in mind the earlier things what I have shared. And my last slide, something of an identity. Let people recognize Rotary the way it stands for. Thank you very much. I hope in the shortest of the time, I could share with you whatever we could share. But there are a lot of resources. I would urge all president-elects to go and visit. And definitely, district governor, AG, and the district team is with you for any help, assistance you require. Thank you very much. Thank you, Ali. Thank you, Dilawar. And at this presentation. Thank you. Right, G. Now we're going to move towards the second last topic of the night before we come into the review and reflections. I would like to request Ali Kazmi. Ali, would you like to please share yourself? My name is Ali Kazmi और मैं ग्लोबल ग्रांट्स का चेयरमैन हूँ कमेटी का इस साल एंड नेक्स्ट ईयर। और मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो ग्लोबल ग्रांट्स के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है या उसके बारे में शेयर करना है कि किस तरीके से एक अच्छी ग्लोबल ग्रांट जो है वो हम बना सकते हैं और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसी के हवाले से जो है वो मेरी प्रेजेंटेशन है। तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ आज के सेशन में। और सबसे पहले सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अली भाई आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है। तो जो भी बात हम आज करेंगे इस सेशन के अंदर वो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि वो गाइडलाइंस मैंने गाए बगाए फैज़ साहब, फैज़ साहब से जो मैंने सीखा है और उसके बाद आने वाले गवर्नर्स राव सलीम साहब, रईस भाई, आफ्ताब साहब, अवैस साहब, तहजीब आदमी साहब, इनसे जो मैंने थ्रू आउट इन सालों में जो सीखा है वो मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा ग्लोबल ग्रांट्स के हवाले से। तो सबसे पहले जो हम इसमें जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें जो ग्रांट करनी है उसको प्लान करना है कि किस तरीके से हमने जो है ना अपना प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। सबसे पहले क्लब्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट या कोई आइडिया या कोई नीड
जो वो समझते हैं कि जी यहाँ पर जो है इस एरिया में गैप है और ये हमें फिल करना चाहिए कम्युनिटी के अंदर जाकर, और इससे जो है वो सस्टेनेबल जो है ना इम्पैक्ट होगा और बेहतरी आएगी। तो सबसे पहले जो है वो आप अपना आइडिया जो है वो कंसीव करते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं कि कौन सी एरिया में नीड है, कौन सी जगह पर जो है वो हमें जो है वो प्रोजेक्ट करना है, ग्लोबल ग्रांट को जो है ना वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। उसके हवाले से अभी पिछले 2-3 सालों से हम जो है वो एक 1 पेजर टेम्पलेट भी शेयर करते आ रहे हैं क्लब्स के साथ कि वो फिल करें और हमसे शेयर करें गाय बगाए। वो हर साल ऑनलाइन भी वो अवेलेबल है, इस साल भी शेयर किया गया है और नेक्स्ट ईयर में भी वो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। वो फिल करके आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट के साथ कि ये हमारा आइडिया है, ये हम समझते हैं कम्युनिटी में नीड है, यहाँ पर हमें ग्लोबल ग्रांट करने की ज़रूरत है। तो वो हम उस आइडिया को लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, रिव्यू करते हैं, उसको आपके साथ बैठकर डिस्कस कर उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको इस शेप में लेकर आते हैं कि उसको हम ग्लोबल ग्रांट की तरफ लेकर जा सकें और अप्रूवल कराकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, अब इसमें जब आप ग्लोबल ग्रांट करने जा रहे होते हैं तो इससे में मैंडेटरी है कि जी आप ग्लोबल ग्रांट मैनेजमेंट का सेमिनार आपके जो क्लब के ऑफिसर्स हैं वो उसको अटेंड करें, ताकि वो वहाँ पर बहुत डिटेल से बात होती है ग्लोबल ग्रांट मैनेजमेंट के ऊपर, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर और उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन के ऊपर और उसकी क्लोजिंग के ऊपर। तो ये ज़रूरी है कि क्लब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज वगैरह जो भी आपके ऑफिसर्स हैं क्लब के, वो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और इसी सेमिनार के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो MOU साइन करता है क्लब के साथ कि किस तरीके से जो है ना वो आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है ग्रांट्स की। उसके अलावा कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई रिक्वायरमेंट आपके डिस्ट्रिक्ट ने सेट की होती है तो वो भी आपसे डिस्कस की जाती है, वो भी आप एग्री करते हैं और वो मामला तय हो जाते हैं कि जी ये क्लब जो है, अगर कोई क्लब ड्यूरिंग द ईयर ग्लोबल ग्रांट करना चाहे तो वो क्वालिफाई करता है ये MOU साइनिंग करने के बाद। नेक्स्ट, उसमें जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई इम्पोर्टेंट नीड जो है ना आइडेंटिफाई की हो, अगर कम्युनिटी ने खुद से आइडेंटिफाई की हो तो वो बहुत ही अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ GSN के अंदर एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे देहात में जब हम जाते हैं तो वो वहाँ के जो नोटेबल्स होते हैं या कम्युनिटी में जो भी जिनकी से होती है वो खुद बताते हैं कि ये इस इलाके में इस चीज़ की नीड है, एजुकेशन की है या फिल्टर प्लांट्स लगाने हैं या कोई हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ डेवलप करनी है या कोई हेल्थ की फैसिलिटी है उसको सोलर सिस्टम की ज़रूरत है। तो वो खुद अगर आइडेंटिफाई करें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप भी उनसे जाकर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनका जो इनपुट आना है वो मेक श्योर करता है लॉन्ग टर्म में कि प्रोजेक्ट जो है ना वो सस्टेन करेगा। उसके बाद जब आप एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं म्यूचुअली जो एरिया है जिसमें आपने या जो नीड है जब जिस पे आपने काम करना है या प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो रोटरी के एरिया ऑफ फोकस है वो उसमें बिलोंग करता हो, उसमें से उस डोमेन के अंदर वो आता हो। और जो 7 रोटरी के एरिया ऑफ फोकस है, प्रमोटिंग पीस है, फाइटिंग डिजीज है, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, सेविंग मदर एंड चाइल्ड चिल्ड्रन है, सपोर्टिंग एजुकेशन है, ग्रोइंग लोकल इकोनॉमीज है, इन्वायरमेंट अभी रिसेंटली ऐड किया है रोटरी में। तो मैं समझता हूँ कि ये 7 एरिया जो है बिल्कुल की एरियाज हैं और हमारी जो भी गैप्स हमारी सोसाइटी में नज़र आते हैं ये बहुत इजीली इन 7 एरिया के अंदर से ही आते हैं। ये 7 एरिया गैप्स को जो है कवर करते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो मिनिमम $30,000 का होगा और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है अभी हाल ही में रोटरी ने उसको रिड्यूस किया है। पहले ये होता था कि इंटरनेशनल पार्टनर को 30% देना होता था, अब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस होके
15% पे आ गई है। अब इसमें इंटरनेशनल पार्टनर जो है वो 15% देंगे और इसके साथ साथ 80% जो भी टोटल GDF बनता है उसका 80% जो है वो अब रोटरी इंटरनेशनल इसको मैच करेगा। पहले हुआ करता था कि 100% मैच करते थे। अब DDF जो भी DDF हमारे डिस्ट्रिक्ट से इंटरनेशनल आ रहा होगा उसका 80% जो है वो DDF इंटरनेशनल जो है ना उसको रोटरी इंटरनेशनल उसको वो मीट करेंगे। तो उसमें ज़रूरी है कि जो दो क्लब्स हों, एक आपका होस्ट पार्टनर है, एक इंटरनेशनल हो गया, और ये प्रोजेक्ट जो है फोकस करेगा कम्युनिटी की नीड्स को। अब जब आप कम्युनिटी में जाकर नीड असेसमेंट करते हैं तो इसका एक पूरा जो है ना टूल अवेलेबल है माई रोटरी के ऊपर, जिसका मैंने नाम नीचे मेंशन किया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो वो पूरी आपको गाइडलाइन फ्राहम करते हैं कि कम्युनिटी मीटिंग्स करनी है किस तरह से, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सर्वेज उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यूज करेंगे या दीगर जो चीज़ें जिस तरीके से कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है उसकी क्वेश्चनिंग भी उसके अंदर अवेलेबल है। तो वहाँ से आपने रेलेवेंट क्वेश्चनिंग सिलेक्ट करके एक सर्वे फॉर्म या इंटरव्यू के क्वेश्चन या फोकस ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चन जो है वो ले लेने हैं। ये इम्पॉर्टेंट टूल होगा जो आप फिल कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूँ समझे मैंडेटरी है। ये आपने ग्लोबल ग्रांट के साथ अब आपने सबमिट कराना होता है। नेक्स्ट कर दें, उसको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट, इसको भी नेक्स्ट कर दें। अब आप आ गए हैं ग्लोबल ग्रांट एप्लीकेशन के ऊपर। आपने नीड डिसाइड कर लिया है, कम्युनिटी को ऑन बोर्ड कर लिया है और नीड असेसमेंट भी कर ली है, सर्वे या कोई आपने मीटिंग की है, फोकस डिस्कशन ग्रुप मीटिंग की है, कुछ इस तरह से आपने कम्युनिटी कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया है। अब आ गए हैं आप ग्लोबल ग्रांट की एप्लीकेशन के ऊपर। उसमें आप सिंपली ग्लोबल ग्रांट का टाइटल दे सकते हैं जो भी आपका प्रोजेक्ट है। आई एम ट्राइंग कि मैं जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करूं अली भाई, और लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि पूरी बात मैं उनके साथ शेयर करूंगा तो सही रहेगा। आपने टाइप ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट एक आप होंगे, एक इंटरनेशनल है, होस्ट कमेटी के 3 मेंबर्स होंगे, इंटरनेशनल भी 3, और 7 जो है वो एरिया ऑफ फोकस आप उनमें से एक सिलेक्ट कर रहे होंगे जिसमें आपका प्रोजेक्ट बिलोंग कर रहा हो। उसके बाद प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, तो बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट ओवरव्यू आपने लिखना है। ये एक एग्जांपल, नेक्स्ट करते जाइए प्लीज, स्लाइड को नेक्स्ट कर दें। आप भी थोड़ा उसको देखते जाएं, जहां खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट करते जाएं। बहुत सिंपल सा आपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू देना है। ये एक अप्रूव्ड ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है, सिर्फ 2.5 लाइन का हमने इसमें लिखा हुआ है। तो आपने भी इतना बस उसको सिंप्लीफाई रखना है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है और किस तरह से वो किन एरियाज को टारगेट करना है। नेक्स्ट कर दें। अच्छा, उसके बाद आपने इसी ओवरव्यू के अंदर, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि ऑब्जेक्टिव भी आप डिफाइन कर दें, तो प्रोफेशनली जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्मार्ट होते हैं। उनकी एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं, अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन स्मार्ट का मतलब जो है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। टू गेट 200 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन which 50% will be girls enrolled and retained in government primary schools to 20 capacity young volunteers। तो ये एक स्पेसिफिक जो है ना, स्मार्ट जो है ना आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है, उसकी एक एग्जांपल है। इसमें स्पेसिफिक है 200 बच्चे हैं, मेजरेबल है बच्चे करवाने, ये स्पेसिफिक है, और 200 जो है वो मेजरेबल है, अचीवेबल भी है, रेलेवेंट भी है। इसी तरीके से ऊपर जो आ रही है, अगर वो कोई खवातीन के ऊपर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी जो है ना ये रेलेवेंट है। तो ये आपने जो भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाने हैं वो आपके स्मार्ट होंगे, ये आपने ख्याल रखना है। उनको भी बिल्कुल आपने छोटा लिखना है, 1-1.5 लाइन के अंदर, और उसको स्मार्ट रखना है। नेक्स्ट कर दें। उसके बाद जो है ना ये आपका जब एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी तो मेजरिंग सक्सेस, उसमें आप खुद से आप भी डाल सकते हैं। वैसे उसमें ऑप्शंस होते हैं मेजर के अंदर, नीचे अदर में जाकर आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं कि हम क्या चीज़ मेजर कर रहे होंगे। और कलेक्शन मेथड्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज है, पब्लिक रिकॉर्ड है, सर्वेज, क्वेश्चन वगैरह।
ये वहाँ पर बिल्ट इन आपको एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें अवेलेबल होंगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम के बाद हम जाकर जो है ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे या इंटरव्यू करेंगे, वो आपने मेंशन करनी है, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, और कितने बेनिफिशरीज हमें जो है ना वो आ रहे होंगे कि जी इतने टाइम के बाद इतने बेनिफिशरीज हो जाएंगे। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि 50 हमने खवातीन को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, तो 50 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद जो है आपने जो है इसमें जो एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ आ रही होगी कि कौन ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो वो जो भी आपके क्लब के प्रेसिडेंट हैं या जो एक्सपर्ट हैं आपके क्लब में वो प्रोजेक्ट करने के लिए, वैसे जैसे हमारे क्लब में कोई आप कह सकते हैं कि जी उन्होंने खवातीन के कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया तो उन्हीं को ले लें, या किसी ने एजुकेशन पे काम किया हुआ तो उनको ले लें। उनका थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड मेंशन करना है कि जी ये साहब जो है ना वो मॉनिटरिंग करेंगे और जो है ना इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनका ये बैकग्राउंड है और ये इसमें एक्सपीरियंस भी रखते हैं और एक्सपर्टीज भी रखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं, बजटिंग आ जाता है, और उसमें फिर कैटेगरीज हैं। उसमें कैटेगरी के अंदर भी ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट है, काफ़ी सारी उसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें जो बिल्ट इन वहाँ पर आपके पास अवेलेबल होंगी। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि जी ट्रेनिंग तो हो गई है, लेकिन किन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो आपने सामने लिखना है, और उसके साथ में आपने बजट भी जो है ना मेंशन करना है। डॉलर में जो है वो खुद ही कन्वर्ट हो जाता है। बजटिंग में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है वो भी आपने नीचे सिलेक्ट करना होता है। इसमें जब ग्लोबल ग्रांट की आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, उसमें वहाँ पर लिंक दिया हुआ होता है कि जी करंट एक्सचेंज रेट रोटरी का क्या चल रहा है। तो अक्सर क्लब जो है वो ये गलती करते हैं कि जी वो जो टुडे जो आज का एक्सचेंज रेट है वो मेंशन करते हैं, जबकि वो नहीं करना होता। रोटरी का अपना एक एक्सचेंज रेट आप उसको क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, वो आपने पाकिस्तान का जो है वो सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से यहीं इसी एरिया में बजटिंग में डीडीएफ की भी आ रही होती है कैलकुलेशन, आप कितना दे रहे हैं, कैश कितना आ रहा है, इंटरनेशनल डीडीएफ कितना आ रहा है, इंटरनेशनल कैश कितना आ रहा है, और फिर रोटरी फाउंडेशन उसमें कितना दे रही होती है, रोटरी इंटरनेशनल उसमें कितना दे रही होती है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि माई रोटरी के ऊपर जो है ना वो ग्लोबल ग्रांट कैलकुलेटर एक अवेलेबल है। माई रोटरी को विजिट करें या सर्च करें, उसको देखें। गूगल में भी सर्च करेंगे तो वो कैलकुलेटर आपका जो है ना वो आप ले सकते हैं। उसमें जो है ना बहुत इजीली आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जी हम कितने कैश दे रहे हैं, डीडीएफ कितना आ रहा है, इंटरनेशनल कितना हमें मिल रहा है, और रोटरी फिर कितना कंट्रीब्यूट, उसमें सारा बिल्ट इन है रोटरी का, ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ रहा होता है। नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड। अच्छा, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का प्लान आ जाता है। अब उसमें आप मेरे पास एक टूल अवेलेबल है, जो भी क्लब ग्लोबल ग्रांट बना रहे हैं तो मैं उनको वो दे सकता हूँ टूल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर एक मैंने पूरा एक गैंट चार्ट बनाया हुआ है कि किस तरीके से जो है ना इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बनता है। कि पहले ओरिएंटेशन होगी, जैसे ये तो एजुकेशन का एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी हमने एग्जाम्पल ले रखी है। उसमें ओरिएंटेशन होगी पहले हफ्ते के अंदर, उसके बाद दूसरे हफ्ते के अंदर हम क्या कर रहे होंगे वो आ रहा होगा। तो ये एक हमारे पास जो है पूरा चार्ट अवेलेबल है, और उसमें कितना वक्त लग रहा होगा वो हम आगे मेंशन कर रहे होंगे। लेकिन जो टूल हमारे पास है उससे इजीली जो है ना पूरा आपका क्लब ऑन बोर्ड हो सकता है कि किस हफ्ते में किस दिन पर कौन सा काम हम लोग कर रहे होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट कर दें। आप प्रोजेक्ट प्लानिंग डिस्क्राइब द कम्युनिटी नीड्स दैट योर प्रोजेक्ट विल एड्रेस। अब इसमें जो मैं जी नेक्स्ट नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें। अगर नेक्स्ट नहीं हो रहा है तो मुझे बता दें, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मैं खुद ही कर लूंगा इसको। अच्छा, अब प्रोजेक्ट प्लानिंग का सेशन है। मैं अब मेरे सामने चूंकि ग्लोबल ग्रांट की एप्लीकेशन खुली हुई है तो मैं उस पर आ जाता हूँ। जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं मैं उनको, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है तो मैं उनको कवर करता जाऊंगा। अच्छा, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर जो
ऑब्जेक्टिव आपने ऊपर प्रोजेक्ट ओवरव्यू में दिए थे उनको आपने रीफ्रेश करना है। रीफ्रेश भी अगर आप उनको अच्छे तरीके से करके यहाँ लिख देंगे, डिस्क्राइब द कम्युनिटी नीड्स दैट योर प्रोजेक्ट विल एड्रेस, तो ये मैं समझता हूँ सफिशिएंट है, गुड इनफ है। वैसे आप अगर प्रोफेशनली जाएं तो कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को चूंकि सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसलिए ताकि क्लब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल ग्रांट्स कर सकें और ये चीज़ें वो फिल कर सकें। ठीक है, तो आपने जो प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखे हैं स्मार्ट, उनको आपने सिंपली रीफ्रेश करना है और कुछ नहीं करना है, रीफ्रेश करना है। उसके बाद हाउ डिड योर प्रोजेक्ट टीम आइडेंटिफाई दीज नीड्स, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने जो है वो कम्युनिटी में जाते हैं, नोटेबल्स आइडेंटिफाई करते हैं या आप उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे करते हैं, या कोई अखबार में खबर आ जाती है या कोई रिपोर्ट आपके क्लब में सबमिट करा देता है कोई इदारा आके कि जी फलां जगह प्रॉब्लम है, आप उसमें हेल्प करें, तो वो आपने इसके अंदर लिखना है कि जी हमने विजिट किया था। अभी कराची में कुछ दिन पहले एक क्लब के साथ मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो है ना एक प्रिंसिपल साहब ने जो है ना हाईलाइट किया है कि हमारे स्कूल के अंदर जो है ना कंप्यूटर लैब की ज़रूरत है और साइंस लैब की ज़रूरत है, फर्नीचर की ज़रूरत है। तो ये जो जो ये बातचीत हो रही है ना, यही आपने इसके अंदर मेंशन करना है कि जी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हाईलाइटेड दिस एंड दैट एंड एक्सेट्रा नीड्स। और उसके बाद हमने जो है वो एक सर्वे फॉर्म वहाँ पर किया। सर्वे फॉर्म का मैं तस्करा कर रहा हूँ जो हमने माई रोटरी से टूल जो लिया है, वहाँ पर क्वेश्चंस भी उसके अवेलेबल है, आपने कॉपी पेस्ट करके एक सर्वे फॉर्म बना लेते। वो हमने जो है ना उन्होंने हाईलाइट की थी प्रिंसिपल साहब ने, और हमने फिर सर्वे किया वहाँ पर टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, और उन्होंने फिर जो है ना ये चीज़ें हमें हाईलाइट की हैं और ये हमने सर्वे करने के बाद ये रिजल्ट आए। और फिर इसमें प्रोफेशनली तो जो आखिर में सवाल आता है कि जी किस तरीके से जो बेनिफिटिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इस सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में जो आप अंडरटेक करने जा रहे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि जी हमने ये सर्वे किया है, तो ये इनकी हमने इनपुट ली है, इनके साथ मीटिंग्स की हैं, इनके साथ फोकस डिस्कशन ग्रुप्स के अंदर इनका जो है ना राय लेकर फिर हमने जो है ना सेट किया कि जी ये बिल्कुल नीड ज़रूरी है, इसको हमने फुलफिल करना है। उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि जी कितनी हमने मीटिंग्स उनके साथ की हैं, 1 बार की है, 2 बार की है, 3 बार की है, पेरेंट्स के साथ अलग की है, टीचर्स के साथ अलग की है, स्टूडेंट्स की राय अलग ली है, स्कूल की मैनेजमेंट है, एसएमसी है, या हॉस्पिटल है, या फिल्टर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, जो भी एरिया को आप कवर कर रहे हैं, जो भी आप फील्ड पर जाकर लोगों को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो ही आपने इसके अंदर लिखना है, वो स्टोरी आपने इसके अंदर लिखनी है। और वो फिक्शन नहीं होनी चाहिए, वो रियल में होनी चाहिए, क्योंकि जितनी कम्युनिटी अगर आप इन्वॉल्व करेंगे उतना प्रोजेक्ट ड्यूरेबल होगा, उतना उसका लाइफ लास्टिंग जो है ना उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये इसका सवाल का जवाब जो है वो आपकी एक्टिविटी से मुंसलिक है। और प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, जी पहले कंप्यूटर लैब बना दें, बाद में साइंस लैब बना दें, जी पहले रिनोवेशन करा लें हॉस्पिटल की, फिर इक्विपमेंट ले आए, यही प्लानिंग है प्रोजेक्ट की। ठीक है, ये क्लियर मैं बता रहा हूँ, यही प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले स्कूल को रंग करना है, उसके बाद फर्नीचर आएगा, उसके बाद बोर्ड लगेगा, उसके बाद पंखे रेनोवेशन के साथ लगा लें। ये बस सिंपली इसको यही आपने मेंशन करना है, यही प्रोजेक्ट की प्लानिंग है और कुछ भी नहीं है इसमें। इतनी पेचीदगी नहीं है, लोग इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद ये नेक्स्ट कर दें, एक फंड रेजिंग मॉडल्स मैंने इसके अंदर रखे हैं। मेरे पास जो है वो कंप्लीट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, क्योंकि स्लाइड्स मेरे ख्याल चल नहीं रही है, तो जो भी क्लब प्रेजेंटेशन चाहे वो डिस्ट्रिक्ट से भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। और बस अब थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का शुक्रिया। किसी को कोई क्यूरी हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, नंबर डिस्ट्रिक्ट के पास अवेलेबल है और मेरी स्लाइड्स में भी अवेलेबल है, प्रेजेंटेशन भी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। के कोई ग्लिचेस आ रहे हैं और जिसकी वजह से कुछ प्रेजेंटेशंस में हमें हिकअप्स रही हैं। आई डू अपोलोजाइज, थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल भी कहीं कहीं आ रहा है,
However, we are trying our best, and inshallah, like I said and shared in the chat group, we will share all the presentations maximum by the 5th. Inshallah, usse pehle hi aapko mil jayenge, but on the safe side, I've taken the number 5th of March for sharing all the slides and presentations. Thank you so much. Now we'll move forward to our last mentor talk, and none other than Admiral Tanveer Ahmed will be giving us a pep talk on Rotary and CSR. Admiral Saab. Thank you, Kazmi Azmat, for having me as a stopgap speaker to fill in the blanks. I would not take much time of the Rotarians, as I see there right now from 120 numbers have come down to 96. When you have lectures, if you stick to timings of the speakers, things don't get worrisome. There's a subject which is very close to my heart, and I would like to share with the future leaders who will be running the clubs. And I very strongly feel that we keep on looking at the Rotary International for grants and all, which we can utilize. I'll give you a few examples, and I would like you all to work on this. And I will give you the personal example of the Rotary Club of Karachi Bay, by which we have been able to do projects, and we have spent about 2 crore rupees on the projects, and we've not taken a single grant from I feel very proud. Now, how do you do this? All the major industries in Pakistan have a responsibility to look after the community in the vicinity with social public trust. It enhances positive relationship. There is sustainability, and it increases profit. The people of the companies would come and give small goodie bags. And I remember in our school, they used to come and they used to present us with toothpaste, a miniature size with a brush. Now, it was basically to improve the hygiene of the students. But at the same time, they were selling their commodity. What we used was the Tibet toothpaste. We would come home and insist with our parents
that if you have to buy anything, go and buy the Tibet toothpaste. Same way, our club has gone into a CSR program with Aga Khan Hospital. We approached them and we are doing operations. Ali, we can't hear you. Assalamu alaikum, everyone. We're having some voice issues here. The internet is having some problems, and Admiral Saab did come online, but we see him here, but there was some unable to somehow get to hear him. Inshallah, और भी मौके मिलेंगे. Admiral Saab is an everlasting support to the district and a thorough gentleman. And no one can ever forget his fellowships RCK Bay has been doing with the Pakistan Navy, and the boat rides and the picnic that we enjoy. An annual picnic, we really miss that. And inshallah, we hope Admiral Saab can revive that spirit of fellowship, having a picnic at the Naval Academy. And I am ever grateful to Admiral Saab for being a mentor for us all, especially for me as well. And whenever we were feeling down, he always used to add a bit of humor and really bring back the joy in our lives again. So I'm ever grateful to Admiral Tanveer Saab, a gem of a person. Thank you so much. Now we'll move for the review and reflection. I will humbly request past District Governor Jahangir Mughal Saab to do the honors. Jahangir Saab. Still voice is not coming. Please check your internet connection, please. Can you hear me now? Okay, thank you. Fellow Rotarians, today is the third day of the PATS seminar and very thoroughly organized by District Governor-elect Tehzeeb Kazmi Sahab and ably conducted by District Trainer Ali Azmat Hafiz of Karsas and his team of Dilawar and
all my friends. Well, as you said, 95 minutes are to be squeezed in 5 minutes. So I can just say a few things that all of the speakers were wonderful. They were outstanding as the things go. And I feel that everybody was above the other in the sense that everybody had an added knowledge. The openings of the today's match started with Rizwan Adia, our district governor nominee. He basically emphasized on the performance of the presidents elect and to excel them in service. And basically, he also appreciated the district governor-elect, Tehzeeb Saab, and Faiz Kidwai Saab, the Rotary International Director, who was also there for some times in this program. He also emphasized on planning and strategic planning of 3 years or more. Well, this is what Rizwan Adia had to say. Then our evergreen Imam Sahab, जिसके पीछे आजकल हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इमाम साहब. Well, as he said, he emphasized more and engaged in planning of Rotary Learning Center, and basically he wanted to continue, and he emphasized in continuing the prophecy of Rotary in the coming years. And I think the service which he has provided to Rotary at the present moment is just putting sort of a 100 octane in a diesel engine. He has put in 100 octane in a diesel engine, and that he has made Rotary run like anything. After that, it was Zinat Bayat who introduced from Sunset Millennium the evergreen PDG Eva from Indonesia. And Eva did not need an introduction basically, but Zinat was so kind and so dedicated that she gave a wonderful introduction to Eva, which matched her caliber in Rotary. And Eva spoke on expand of Rotary, expand our reach to Rotary. And she also gave the core values of service, fellowship, diversity, integrity, leadership. And she emphasized on diversity, equality, and inclusion. Eva basically gave that, emphasized on that. She also raised the point up to women participation up to 30% by 2023. And she also wanted that channels should be open and they should be connected. New models should be developed, but that is the power of Rotary, and types of club, satellite club, passport club, corporate club. And she also emphasized on Toastman collaboration with Rotary. And openness of Rotary. She also emphasized on openness of Rotary, introduction of lower fees in associate memberships and family membership, and different sort of. Basically, she emphasized on plans of Jennifer Jones, the president-elect, RI president-elect in the coming years, and with whom Pakistan will be represented by none less than Faiz Kidwai Saab in the seat of directorship at the RI Chicago office. Well, she also emphasized, Eva also emphasized on young professional collaboration. She also added the public image matters in that is the brand of Rotary, the action, the storytelling, and the Rotary clubs, the goals and collaborations, the experience, and what not so. In fact, I think Eva personality of diversified interests, and especially in shipping and in the strategic requirements, she has a long and a very healthy collaboration with Rotary for a number of years.
Well, after Eva, none less than PDG Ulas had to speak, but due to some operation of a child, that is also a service to humanity, I think. And for that matter, he had to leave. And then Aziz Memon Saab, past district governor Aziz Memon and national chair came up with a 40-year-old polio vaccination and streamlined process of Rotary, which is now being completed in Pakistan. I hope so, inshallah, because this is the first year it has been completed on the 27th of Jan this year, and 2 more years to go. And Aziz Memon Saab also emphasized on the Rotary Foundation, the global grants, and the contribution of $4.3 billion. Almost basically they collected $441 million during the year. And Korea gave about almost 18 grants to Pakistan during the current year. So I hope they will be fully utilized. Polio, as I said, has already completed collection of 40 years. And 27th Jan was the first year to complete, 2 more years to go. But there are some problems in Africa and Nigeria, and for that matter, Bill Gates has been there to still continue to support Rotary, along with many other professionals. Well, in the last was Afghanistan, where unfortunately a few of the vaccinators were killed, and Pakistan is still on the line of improvement. NID campaign has been started on the 6th of March. After that, a very learned speaker, Mr. C.M. Bandre, spoke from 3140, and he spoke precisely on art and science of public image and public relationship. Well, that was wonderful of him who has spoken. He spoke on survey, and he spoke on I would say wine and dine and eat and meet and male and female, and where does Rotary go? Well, brand building, unique image, Apple, Mercedes-Benz, satisfaction, consistency. He spoke on many subjects, basically, brand message for service, leadership, fellowship. Well, I myself is a RPIC from District 3271 at the moment, and it was really a joy of hearing CM Bandre over here, because it speaks volume of our district, that our district has a RI director, and he especially made a point, I hope so, to diversify, to come from Indonesia, speakers from Indonesia, from our neighboring country, India, and from, I think, Bangladesh must have been missed because of some communication problems. Well, where to go from Rotary, where to go from this place to Rotary? So Bandre Saab spoke on many subjects on Rotary wheel and brand strategy and brand distribution and channels, the new generation and website, media. Well, he spoke volume of his brand stability and the point where he can contribute, and Rotary people and Rotarians can contribute. I think it's one of the very basic points of Rotary image, which he, and Rotary relationship, which he emphasized, and he brought it to the knowledge of all the president-elects. And I think this would have been an asset for all the president-elects who must have heard him, and they can gather much more of information on these subjects. After that, the credibility of news and projects and public image awards and external and internal branding and logo. Well, this is all Bandre Saab spoke on, and I think he spoke very well, and he gave an insight of public image to the president-elects, and they must have gone with much more knowledge now today as far as public image and public relationship is concerned. Well, thereafter, none less than we have got a global Grand Master in our district, 3271, Ali Kazmi. He's a wonderful man. He's a man of great capabilities. So he spoke on global grants, and he emphasized on capacity building and global grants. And well,
before I say anything else, I would like just to say one thing, that the global grants are no doubt a very positive aspect of going through the learning process. But I think many other things are also involved while doing the global grants. You have to be you have to get a good PR with the district. You have to have a good PR with the external partners. You have to have good PR with the internal partners, and you should have a consistency in basically putting up the subject. Well, then none else than Admiral Tanveer Saab spoke, and Admiral Tanveer is a matter of fact the mentor of the new district governor nominee, district governor elect, I would say, Hanif Khan Saab from Rotary Club of Karachi Bay. And I hope Hanif Khan Saab would also be a part of it in the coming years. Admiral Tanveer Saab spoke on CSR, he spoke on Tibet toothpaste, and he spoke on his collaboration with Aga Khan University. And at the end of it, it was my turn, and my turn was to also ended up with a summary of today's episode. We had a very good session. We had a wonderful session all 4 or 5 days at the end, and we look forward to on the March 5th for the final of these events, when the president-elects would be given their participation certificates by none else by the district governor and RID Rotary International Director Faiz Kidwai Saab and district trainer Ali Azmat Saab. So all in all, it was a wonderful program organized by a team of very able and I would say very able and generous point of view, I would say, by virtue of timings. They have been always there, and Ali and Dilawar, they also need our appreciation for all the things which they have been doing for the sake of Rotary, not for the sake of their own self, but for the sake of Rotary. And I think this speaks volume of Pakistan District 3271 and the team which has been coming around off and on in the district to pay their to take their share in basically enhancing the image of Rotary in days to come and years. And I hope so, inshallah ta'ala, when district governor, when RI district, when RI director Faiz Kidwai takes up his helms of affairs in 2022, Pakistan would go further and would further go a yard ahead, and inshallah our country will move further with all the neighboring countries, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, and everybody. Thank you so much, Ali Hafiz Azmat. Thank you so much, Tajib Saab, Governor Saab, for giving me the opportunity to speak and to summarize this today's process. Thank you, Wasim. Okay. Is it okay, sir? Your mic is not. Your mic is off. Ali Azmat Saab's mic is off, sir. Sir, Yeah. am I audible? Am I Yeah, you're audible, sir? you're audible. Thank you. Thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप जहांगीर मुगल साहब, you've been very gracious, very kind. I'm deeply honored, and inshallah आपकी support, we fully count on it, because past में you have been a very stalwart, you have been a very pillar for Rotary, and inshallah उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ एक pillar के जरिए से हमें support और guide करते रहेंगे, and a mentor for life always for Rotary. Thank you, Thank sir. you so much. Thank you so much. Thank you so much, PDG Salim Rao Saab. I can see your picture. Zinat, I can Sir. see your smiling face as usual. And I always miss you in our international tours. And Bandare Saab, thank you, sir. Thank you, PDG. Thank you, everyone. Thank you very much. President-elects, Thank you. district team. Thank you, sir. Thank you. I'm ever grateful to Thank you, everyone. Ali. Thank you so everybody. much. Arshad, thank you so Have much, a lovely Arshad. time. Thank you. Fellowship time is Bye. on. See you. Let's all mingle now. We're done with the formal affairs. Thank you. Let's mingle. Fellowship time, Yeah, please. thank you, Ali. Something, Ali bhai. Can we have a group photo if you don't mind? Sure, go ahead.
Yes, of course. Go ahead. Group photo, please. Then we have Tehzeeb Kazmi Sahab. He wants to add a few words, please. Ji, Tehzeeb. जी सलाम वालेकुम सलाम तहजीब। मैंने कहा इतनी जबरदस्त डिस्कशन चल रही है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर एंड मुगल तो मैं आखिर में that has to be lively ना, that it's a part of the district training. मैं बस सब प्रेसिडेंट से आखिर में यही थैंक यू सर, थैंक यू कि आप सब लोगों ने बहुत पेशेंस से और 3 दिन हमारे सेशंस अटेंड किए। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था एवरी प्रेसिडेंट्स का। हमारी टीम ने आप लोगों को बहुत अगर ये कहें कि फॉलो किया तो बहुत अच्छा होगा, और अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों कहूँ को बहुत तंग भी किया हमारी टीम ने आपको। हम फॉलो आपके साथ करते रहे कि आपने सेशन अटेंड करना है, और आप लोगों ने बड़े जिसको कहते हैं टॉलरेंस के साथ सारे सेशंस अटेंड किए, और ये आप सब लोगों के लिए बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग टीम ने आप लोगों को दी। हमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर अली हफीज अजमत और उनकी पूरी ट्रेनिंग टीम, जिसके अंदर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारे रोटेरियंस ने पार्टिसिपेट किया। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये सिर्फ आपके सामने आके प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये पीछे पूरी एक ट्रेनिंग प्रोसेस हमारा एक चला है। पिछले 15-20 दिन में 2-3 ट्रेनर्स हुए। सीएम बांद्रे साहब उसको पूरे ट्रेनिंग जो प्लान था हमारा उसको हेड कर रहे थे, एडवाइजर कर रहे थे, और वहाँ प्रेजेंटेशंस हो रही थी। वहाँ फिर प्रेजेंटेशंस के बाद फिर प्रैक्टिस होती थी, फिर देन हम आपके सामने ये सारे जितने हमारे स्पीकर्स आए, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। इसके साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट की पूरी टीम जिसको हेड कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रजा ताबिश, बहुत जबरदस्त तरीके से मैसिव काम किया पूरे सेक्रेटेरिएट ने। हमारा सेक्रेटेरिएट जिस तरह से हमने बनाया है, कराची, मीरपुर खास, हैदराबाद, सखर, बलूचिस्तान, तमाम ट्रेनिंग टीम्स के साथ मिलकर सेक्रेटेरिएट ने कोलैबोरेट किया और हम अच्छे नंबर्स तक पहुंचे। अब मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे होस्ट क्लब का, उनके प्रेसिडेंट्स का, कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग टीम को फैसिलिटेट किया, सेक्रेटेरिएट को फैसिलिटेट किया। और आखिर में मैं हमारे रोट्रैक्टर्स DRR दिलावर हुसैन, शर्जील हबीब, टेक्निकल टीम रोट्रैक्टर्स के साथ काम का, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको रन किया सारे प्रोग्राम्स को। देन उसके बाद जो हमारे सेक्रेटरीज हैं वो एज ए ऑब्जर्वर उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक खुशाइन बात है कि हमने इस साल सेक्रेटरीज को भी जो है वो अपॉर्चुनिटी दी कि वो आए और प्रेसिडेंट्स की ट्रेनिंग के अंदर बैठे, देखें कि प्रेसिडेंट हम क्या चीज सिखा रहे हैं। इसके बाद मैं एक चीज और करूंगा, जो हमारे मेंटोर हैं फैज, हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक चीज और इंक्लूड कराई इस दफा इस ट्रेनिंग सेशन के। हमारे रोट्रैक्टर्स प्रेसिडेंट इलेक्ट्स हैं हमारे रोट्रैक्ट क्लब्स के, उनको भी हमने इसमें इनवाइट किया जूम पे कि वो भी ऑब्जर्वर आके फ्यूचर लीडर के वहां बैठे और इस जूम की मीटिंग के अंदर लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बने। मैं शुक्रिया अदा करता स्पेशली मेरे बड़े भाई डॉक्टर आफ्ताब इमाम साहब का कि उन्होंने पूरे थ्रू आउट DTTS में, AGTS में, पूरे पैट्स में हमारे साथ 3 दिन सब लोग जुड़े रहे। गवर्नर कुरैशी साहब का, जहांगीर मुगल साहब का, सलीम राव साहब का, अख्तर अलवी साहब का, इरफान कुरैशी साहब का, और अवैस अहमद कुहारी साहब का, DGN हनीफ खान साहब का, DGND रिजवान आडिया साहब का, तमाम एक मेंबर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि सब ने बहुत जबरदस्त हमारे साथ जिसको कहते हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेशंस किया, हमें सपोर्ट किया और हम एक प्रोग्राम लेके आए। स्पेशली आप प्रेसिडेंट्स, इस सारे क्रेडिट जो जाता है सारे प्रेसिडेंट्स को जाता है कि ये प्रेसिडेंट्स का शो था और ये प्रेसिडेंट्स की ट्रेनिंग थी, और जिस तरह से हमें नंबर्स मिले हैं तकरीबन हर इवेंट्स के अंदर दोनों तीनों दिन कहीं 80 से ज्यादा प्रेसिडेंट्स आए, कहीं 90 से ज्यादा प्रेसिडेंट आए, और आज के नंबर्स अभी आएंगे तो मैं आपको और बताएंगे हमारे लोग कि कितने प्रेसिडेंट्स थे। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, हम बहुत एक्साइटेड हैं। 5 तारीख को आप सबको वेलकम करते हैं मैरियट होटल के अंदर। एक बहुत जबरदस्त हमने इवेंट प्लान किया है
मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, कल्चरल ड्रेस हमने आज अनाउंस किया, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को लेके कि हम एक कल्चरल ड्रेस, लोकल ड्रेस प्रमोट करें, उसकी मैं रीजन भी बता दूंगा आगे वहां पर। और इसी तरीके से वहाँ प्रेसिडेंट्स को एक्नॉलेजमेंट की सर्टिफिकेट मिलेंगे, पिन्स मिलेंगी प्रेसिडेंट्स की, और एक बहुत अच्छा इमेजिनिंग रोटरी के ऊपर एक सेशन वहाँ प्लान किया है, जिससे हमारे चीफ गेस्ट रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर इलेक्ट फैज किदवाई साहब उसके ऊपर खिताब करेंगे। हमारे 327 काउंटर पार्ट मेरे दोस्त PDRR अदनान रोहिला और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है वो भी आ रहे हैं। मैं तमाम 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी प्लीज इस 5 तारीख के इवेंट को ज्वाइन करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। फेलोशिप ऑन है और बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात हैं ये कि हमने जो कल्चरल ड्रेस अनाउंस किया है इसकी क्या थीम होगी और ये किस तरह से होगी। तो ओवर टू डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी डेजिग्नेट रजा ताबिश कि वो इस फेलोशिप इवेंट को होस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। और एक पिक्चर सबके साथ, जैसे अली भाई ने कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहे, आबाद रहे। पिक्चर्स हम बना रहे हैं। शुक्रिया गवर्नर साहब। सब लोग के माइक्स खुले हुए हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं हमारी कल्चरल नाइट के बारे में पूछने के लिए तो मैं हाजिर हूँ। और बेसिकली जो लोगों का एक ख्याल था जहन में कि सिर्फ 2 ही रंग के आप कपड़े पहन सकते हैं, पर्पल एंड ग्रीन, ऐसा नहीं है। आप जो भी नेशनल ड्रेस पहनते हैं, लोकल ड्रेस पहनते हैं, उसके अंदर पर्पल और ग्रीन का एक हिंट होना चाहिए, तो मतलब हल्का सा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सलवार कमीज पहना किसी भी रंग का, मैं उसके ऊपर एक जैकेट पहनता हूँ या वेस्ट कोट पहनता हूँ, तो उसके अंदर मेरा पॉकेट स्क्वायर है वो पर्पल कलर का हो जाए। अगर मेरे पास पर्पल कलर के शर्ट या वो नहीं है, क्या कहते हैं, वेस्ट कोट नहीं है तो छोटा सा पॉकेट स्क्वायर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम सूट पहने हुए हैं तो उसके अंदर जो हमारी टाई है वो पर्पल या ग्रीन कलर्स के अंदर हो सकती है, तो उसके अंदर भी हमारा पॉकेट स्क्वायर पर्पल या ग्रीन कलर का हो सकता है। इवन अगर ये भी नहीं है तो हम लोग एक पर्पल या ग्रीन कलर का एक स्टोल पहन सकते हैं। एक स्टोल जो होता है या मफलर होता है, उसको हम ऐसा पर्पल ग्रीन कलर का पहन सकते हैं ताकि हमारा इवेंट कलरफुल इवेंट हो और अपने लोकल ड्रेसेस को हम प्रमोट करें। तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं, हमारे जो मेहमान कराची से बाहर से आएंगे, खासतौर पर तरपारकर साइड से, वो हमारे इवेंट में बहुत रंग डालेंगे और डिफरेंट कलर्स के कपड़े अपने इंशाल्लाह करें। अगर किसी को सवाल हो Raza Tabik, when is this cultural night? Is it on the pets graduation? This is on the 5th. This is on the 5th. Okay. Yeah. Raza, wonderful. Mashallah, you have done wonders. आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया. Just hearing you after such a long time. You're an inspiration for all of us. Thank you. प्रेम करा ले प्रेम साईं ठीक ठाक आयो आप खुश आयो प्रेसिडेंट है तो हुआ वीआईपी जी जी सर जी स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग मेहनत करनी पवंदी हाँ सर बिल्कुल गॾायो टीम तो हलंदा थी वासा गॾु बिल्कुल कोशिश करी पिया जी जी हाँ सर मेंबरशिप इंक्रीज कंदासीं इंशाल्लाह इन दफ़ा कोशिश कंदासीं कि मेंबरशिप सपोर्ट कजो बिल्कुल बिल्कुल सर फाउंडेशन के सपोर्ट कंदासीं कंट्रीब्यूशन भी कुछ वठी वेंदासीं पोलियो फॉरवर्ड इन दफ़े केस जी जी बिल्कुल जो मकसद यो काने पोलियो जो रिस्क काने थे ताके क्या बिल्कुल सर अवेयरनेस कंदासीं एनआईडीज में पार्ट वठंदासीं ऐं लेडी हेल्थ वर्कर पोलियो वैक्सीनेटर ते जीअं असांजो एनुअल इवेंट हूंदो आहे उहो साईं ते का लाड़काणे जी क्लब आहे जी मुंहिंजे दड़े खां ॻाल्हायां पियो साईं कहिड़ा हाल अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास छा नालो अवांजो इसाक पीरज़ादो हिते एजुकेशनल कैंपेन्स कहिड़ियूं हलियल आहिनि
कई आए एजुकेशनल कैंपेन्स वगैरह या कई प्रोजेक्ट्स? हाँ बिल्कुल, एजुकेशंस में असांजे क्लब जूं आर्ट्स या रोटरी कॉप कमेटी बि आहे, रोटरेक्ट्स बि आहिनि, त उन्हनि जो हिते आहिनि एजुकेशन में, त हिकिड़नि स्कूलनि खे ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज़ ॾियारियूं अथनि। उन खां अलावा ट्यूशन सेंटर्स आहिनि, ऐं इन्ही में असां जूं कुझु यूनिवर्सल ग्रांट्स जूं बि आहे तयारी, उहा बि कई अथऊं हेल्थ ते ऐं एजुकेशन ते। हिकिड़ो को फुल फ्लेज स्कूल को ठाहिण जो कोई काई अहिड़ी शइ नथी आहे जेको फुल फ्लेज स्कूल ठाहिजे न्याणियुनि जे लाइ? रोटरी कोर कमेटी ठाहियो आहे, न्याणियुनि जे लाइ बि आहे ऐं बॉयज़ जे लाइ बि। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जे तावन सां उहो असांजी कोर कमेटी उहा करे पई। अच्छा, पीज़ादा साहब तव्हांजी क्लब कहिड़ी आहे? मोहनजोदड़ो। मुंहिंजो दड़ो साईं, असांजी आहे पोर्ट सिटी कराची।